Hello everyone, welcome back to Unsarkari. Today we critically analyze 8th February newspaper. गुजरात के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। तो प्रस्ताव जो सर्वसम्मति से पास किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जितने भी जो भी राज्य के सरकारी संस्थान हैं, उन सभी में 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक स्कूल में स्टोरीज के कौन तरह से भगवत गीता का पाठ कराया जाएगा। जो किस तरह के गुण हम भगवत गीता से अपना सकते हैं तथा उनसे क्या चीजें सीख सकते हैं, उन सभी को स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा ताकि वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके और साथ साथ जो भारत की संस्कृति है उससे जुड़े रह सके। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की समृद्धि और संस्कृति की जानकारी के लिए इसको जोड़ा गया था ताकि जुड़ाव तो पैदा यहाँ पे कीवर्ड ये बोल सकते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का ये एग्जाम्पल है। हाँ, और भगवत गीता और भागवत गीता का फर्क देख सकते हैं। ये कि जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण जी का संवाद है वो भगवत गीता है, जहाँ पर कृष्ण जी की अलग अलग स्टोरियों का वर्णन किया गया है वो भागवत गीता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी की जाति या धर्म का उल्लेख ना किया जाए, यानी कि कोई भी इंसान जो याचिका दायर कर रहा है उसकी जाति या फिर धर्म का वर्णन ना किया जाए। जो भी डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी निचली अदालत में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 14 की बात कर सकते हैं, जो कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, जहां पर आप किसी भी धर्म जाति से हो या फिर आपका कोई भी प्रोफेशन है, सभी को समानता का अधिकार है। तो वो देखा जा सकता है कि याचिका में कहा गया है कि जहां पर पति और पत्नी दोनों का अलग अलग उल्लेख किया गया था किस जाति से या फिर उनका धर्म क्या है, तो उसको पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने कहा है कि जो कोऑपरेटिव है उनको भी और ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। किस तरह से वो लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। जो CSR निधि कलेक्ट की जाती है उसका कुछ परसेंट हिस्सा गर्ल्स की एजुकेशन में भी दिया जाना चाहिए ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि अगर हमें अमृत काल या स्वर्ण काल बनना है तो उसके लिए जरूरी है कि जो महिलाएं हैं उनको भी एम्पावर किया जाए। कल हमने डिस्कस किया था कि क्या IAS IPS जो बच्चे होते हैं उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए, या फिर जो अनुसूचित जाति होती है उनके लिए सब लेयर या फिर जो क्रीमी लेयर की बात हुई थी, सब कैटेगराइजेशन, उसको किस तरह से। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2004 के फैसले के अनुसार राज्य सरकार के पास यह अधिकार नहीं है कि अनुसूचित जाति यानी SC और ST की श्रेणी या उप श्रेणी का अधिकार बनाए। जब हम मंडल कमीशन की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, तो उन्होंने OBC के अंदर सब कैटेगराइजेशन की बात की थी। इसके अलावा हम यहाँ एक केस का नाम याद रख सकते हैं, EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश के, जिसमें ये कहा गया था कि सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता, जो कि 2006 में पंजाब सरकार ने किया था। सिख समुदाय के अंदर वाल्मीकि और मजहबी को SC के अंदर इन्वॉल्व कर दिया था, जिससे उनके जो 15% आरक्षण SC कम्युनिटी को दिया जाता है उसका 50% हिस्सा वाल्मीकि और मजहबी समुदाय को मिलता, तो उसको अवैध असंवैधानिक घोषित किया गया था। तो कोर्ट का नाम याद और यहाँ पे क्रीमी लेयर, हाँ, क्रीमी लेयर जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो था इंदिरा साने जजमेंट 1992 में। और वो था कि OBC के अंदर जो उनके अंदर जब हम SC और ST की बात करते हैं तो उसके लिए राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं है कि वो हाँ, उनकी लिस्ट जो है सेंटर ही अलोय करेगा जो उनकी बात है। आप स्टार्ट कर दीजिए मानसी। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिस इज रिलेटेड टू द डिजिटल सिक्योरिटी, द डेटा सेफ्टी। सो हेयर वी आर सीइंग कि फाइनेंस मिनिस्टर्स के सिग्नेचर्स को फोर्ज किया गया एंड नाउ adequate action are being taken. So here we are just talking about the digital safety, and recently हमने देखा है the Personal Data Safety Act that has been introduced, and उसको हम हमेशा कंपेयर करते हैं यूरोप के GDPR से, जो कि वहाँ का डिजिटल सेफ्टी एक्ट है। So here we have talked about कि digital safety के लिए installation of firewalls, the role of certain जो कि computer emergency response team of India है, that becomes important, and more synergy is required when we talk about
coordination between different institutional stakeholders. Apart from this, social media self-regulation becomes important because इवन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे हमने बात करी थी कि इवन कोर्ट जजमेंट्स जो हैं उनको भी फोर्ज किया जाता है, तो वंस दैट जो न्यूज़ है अगर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो उसका जो फर्स्ट हैंड इम्पैक्ट होता है, जो इनिशियल इम्पैक्ट होता है, उसको कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो इसलिए रोल ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज इम्पोर्टेंट। सो हम जब भी बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, तो द रोल ऑफ opposition is very important. So strong opposition is required. So here in this article we are talking about the same, how we are seeing during the passing of the budget in the parliament, we are seeing what points have been raised by the opposition. So this becomes critical क्योंकि opposition का main role हम बोलते हैं it is to identify the flaws. We can identify कि where is the current government going wrong. तो वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, रेस करने में रोल ऑफ ऑपोजिशन बिकम्स इम्पोर्टेंट। सो उन्होंने बोला जो जीडीपी हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसकी फुल फॉर्म उन्होंने ऐसे पुटअप की, जी इज फॉर द गवर्नमेंट इंट्रूजन, डी इज फॉर डेमोक्रेटिक बिट्रेयल एंड पी इज फॉर पॉवर्टी कॉन्टिन्यूइंग। तो काउंटर टू दिस आर फाइनेंस मिनिस्टर, शी स्टेटेड कि जीडीपी की फुल फॉर्म इज गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। सो ये जो जीडीपी की है, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस, दिस वी कैन इवन राइट समवेयर इन आवर आंसर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो चैलेंज यहाँ बोला जा रहा है, पॉवर्टी कंटिन्यूइंग, ऑल्दो वी हैव टॉक्ड अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, that 25 crore people have come out of poverty in the last 10 years. This is one figure. Unprecedented unemployment. The phrase is unprecedented. So this is one of the real challenges. And हम हमेशा नहीं बोल सकते हैं कि ऑपोजिशन हमेशा ही जो पॉइंट्स हैं उसमें पार्टिसन इंटरेस्ट होते हैं। तो दिस इज one of the major challenges going forward. So unprecedented unemployment, we say इंडिया में 90% of जो workforce है, they are working in the informal sector. So ensuring social security benefits, how we can ensure कि they are coming into the formalized economy, how even when we talk about more people getting engaged in gig economy, so all these area become important. And in unemployment की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले skills training की बात आती है, तो that's there। and इसके अलावा सो इट इज सेइंग कि डबल वैमी फेस कर रहे हैं लोग। डबल वैमी मीन्स फर्स्टली फॉल इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हो रहा है, एंड सेकेंडली शॉकिंग हाई अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज दे आर टर्मिंग इट टू बी डबल वैमी। एंड इसके अलावा हमने कल क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था the issues or the disputes between center and states. So here we are seeing another example. Karnataka CM जो हमने कल बात करी थी, march to Delhi, again about the fiscal issues and the mismanagement of the funds on the part of the state. Secondly, West Bengal. So one issue was the Tista River, and secondly here it is seeing West Bengal Chief Minister had a dharna for 2 days demanding release of the MG Narega funds. So ये भी हमने कल बात करी थी, diversion of funds, उसके लिए ED is carrying out the required investigation. So ये एक डिमांड ये भी है कि MG Narega funds जो हैं वो कम allocate किए गए थे, तो इसके ऊपर भी इशू था between center and state. एंड इसके अलावा हमने बात करी है, वन ऑफ द मेजर इश्यूज हैज बीन ओवर द गवर्नर रिजर्विंग द बिल्स, नॉट प्रोवाइडिंग अ सेंड और सेंडिंग और कीपिंग द बिल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, तवांग सेक्टर की जब हम बात करते हैं, so this is a strategically important sector for India. It is located in the state of Arunachal Pradesh. So we have seen clashes between India and Chinese troops in 2020 in the Tawang region. So China claim करता है certain area, certain territorial regions of the state of Arunachal Pradesh, and यहाँ पे हमने देखा था कि चाइना ने कुछ अपने खुद के मैप्स भी रिलीज किए थे claiming certain territories which falls within the territory of India. So that is one of the violations of India's sovereignty.
Apart from this, after 2020, we have seen the number of clashes that has reduced. So, what measures we can say? Firstly, we talk about the de-escalation measures that have been talked, and the disengagement talks which go on. That's there, and confidence building measures. So, this is there. Apart from this, focus किया गया engagements at the local level. So even the role of residents in the border areas is important, and hence we talk about the importance of the vibrant villages program as well. So construction of more infrastructure in the border areas. So there the role of border roads organization becomes important. So all these things are interconnected, and Bumla is again located in Arunachal Pradesh. So Tawang and Bumla, these are two important locations, and Yangtze area of Tawang. So we can remember these. Coming to the next topic, it is talking about Prithvi. So what is Prithvi? So when we're talking about research and development in the science, so this is the new program that is being launched, or scheme or policy. So the budget allocation for this is around, we can say, approximately 4800 crore rupees. So this would be helping in more research and development as far as atmosphere, polar research, and ocean research is concerned. So it is kind of an umbrella, one single umbrella program for the research in all these respective areas. So uh, naturally it would come under the Ministry of Earth Sciences, and full form of Prithvi is Prithvi Vigyan. So Vigyan is science, and this is going to continue up till 2026. So like it is related to atmosphere, hydrosphere. Hydrosphere is about water research. Cryosphere हमने बात करी थी even in questions. The permanently frozen layer found in the glacier regions. Geosphere, geography. Biosphere is combination of all. So in respective areas, my science and research and development becomes important. So it would help us in better understanding role of atmosphere, ocean, and poles kitna important hai. Given we are seeing the impact of and the threats and the challenges rising because of climate change. So research becomes much more important. And इससे पहले के अगर हम research programs की बात करते हैं, तो I've highlighted them. These are across O Smart, Pacer, Sage, and Reach Out. So all of these have been now subsumed under Prithvi. तो डीप ओशन मिशन की भी हम बात करते हैं, 2021 में इसको लॉन्च किया गया था. डीप ओशन मिशन मींस कैरिंग आउट रिसर्च as far as the mineral availability is concerned, about the polymetallic nodules, which is going to be, we can say ki, through this research it might be possible we get some important resources and minerals which can help us in dealing with the challenges of energy security. And apart from this, surveying and exploration of metals like cobalt, copper, nickel, and manganese in the central Indian Ocean basin. So all of these surveys and exploration have been carried out. So all these metals, they form part of critical minerals. And Moving also, if you forward. talk about deep sea exploration, so five countries in which already they are capable, they have achieved it. That is USA, Russia, China, France, and Japan. Yes. And even जब हम international waters में बात करते हैं of deep ocean mission या exploration, so there the ascent of the International Seabed Authority becomes important. And even we have the UN Convention on Law of Seas, UNCLOS जिसको हम बोलते हैं. So this is also important part and component of even the maritime security of India. So challenges again the rising presence of China. हम बात करते हैं China research vessels अपने send कर रहा है. Of late हमने देखा था कि मालदीव में स्टेशन किए गए, इवन श्रीलंका में चाइना ने रिसर्च वेसल अपने स्टेशन किए. So that creates a cause of concern for India. Next, north-south divide. Again, this is also on the regarding the topic of the issues between center and states. So opposition is creating a north-south divide.
So an entire state is speaking this language, nothing can be worse than this. So cooperative federalism and competitive federalism, these are the key words. So this is what Prime Minister has to say, कि the development for the country's development is our mantra. So states development for the country's development is our mantra. We encourage competitive and cooperative federalism. Sabka saath, sabka vikas is not a slogan. It is Modi's guarantee. So Modi's guarantee की जगह we can like इसको interpret करने के there are several ways. It is not just from the perspective of one individual or the prime minister. It is a guarantee of the government, which is again forms part of in um, the important provisions of the constitution also. So this is there, and हमने बात कर ली है Karnataka state and the protest and the reason for that. Next topic. भाषण की बात भी कर सकते हैं। वो AI टूल है जिसका प्राइम मिनिस्टर ने यूज किया था आंध्र प्रदेश या कर्नाटका में जब वो स्पीच दे रहे थे उस टाइम पे। तो वो उनकी बोली हुई बात को तमिल या तेलुगु में कन्वर्ट कर रहा था ताकि जो लैंग्वेज के बीच में जो प्रॉब्लम्स आती है वो सोल्व की जा सके। तो उसको भी देख सकते हाँ हैं ये कि हमेशा, हाँ हमेशा देखा जाता है जब भी पॉलिटिकल रैलीज होती है, स्पीचेस होती हैं, तो ये हमेशा जो भी बोला जा रहा है हिंदी में उसको कन्वर्ट किया जाता है इन द रीजनल लैंग्वेज. सो दिस शोज द importance of the diversity of India also. So many there are diverse regional languages which forms an important component of again unity and diversity. And we are seeing कि इसको कहीं ना कहीं implement भी किया जा रहा है अंदर the national education policy also, कि regional languages में जो है initially education would be provided so as to again enhance or increase more outcome based learning. So foundational knowledge should be strengthened. So नेक्स्ट इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं. नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑफ लेट जब हम इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात करते हैं, कल भी हमने बात करी थी मोरे टाउन, तो मोरे टाउन इज इन मणिपुर. तो गवर्नमेंट टू मेजर्स रिसेंटली देखे गए. फर्स्ट इज द विड्रॉल ऑफ द फ्री मूवमेंट रिजीम. Secondly, the border fencing. So free movement regime, we saw कि up to 16 किलोमीटर दोनों like across border free movement allow करता था without any visa. So कुछ ऐसी states हैं जो withdrawal of free movement regime को oppose करते हैं. They are saying कि जो tribal community है, जो जिनको हम बोलते हैं जू एंड कुकी कम्युनिटी, वो दोनों इनहैबिट करते हैं मिजोरम और म्यांमार में सॉरी. तो बोला जा रहा है कि उनकी राइट है, राइट टू लिव टुगेदर. तो दे आर सेइंग द स्टेट्स लाइक मिजोरम एंड नागालैंड वो अपोज कर रहे हैं विड्रॉल ऑफ the free movement regime. So they're saying कि Zoo community inhabiting both Mizoram and Myanmar, they have the right to live without any barrier between them. But if we talk about the other side, that is, what are the challenges which have emerged because of free movement regime is the illegal cross-border insurgency and infiltration. And specifically when we have seen कि Myanmar में the 2021 में junta rule has came, तो उसके बाद से we have seen कि Rohingya refugees from the Rakhine state, they've been moving into India and Bangladesh. And extremist groups भी जब हमने देखा ethnic violence in the state of Manipur, तो even extremist groups like United Liberation Front of Assam, I, that is independent, उन्होंने भी attacks किए and then they went back to Myanmar so that उनके against कोई ऐसा action ना लिया जाए. So in a way this free movement regime was being misused. जो loopholes थे उनको misuse किया जा रहा था. So that is why My question is, क्या ये जो step लिया जा रहा है, is it not in a complete different direction than the neighborhood first policy of India? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से पहले प्रायोरिटी आती है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की. एंड इफ समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट दैट, सो दैट वुड बी गिवन प्रायोरिटी एंड देन वी विल टॉक अबाउट नेबरहुड फर्स्ट. फर्स्टली हमें इंटरनली वी नीड टू इंश्योर कि देयर इज पीस एंड सिक्योरिटी, एंड इफ समथिंग और नॉन स्टेट एक्टर्स दे आर डिस्टर्बिंग दैट, तो adequate actions would be taken and withdrawal of free movement regime forms a part of that. Okay. देन नेक्स्ट आर्टिकल, जैसे हमने 2008 मुंबई टेरर अटैक्स में देखा कि
the terrorists, they came through the sea route. So similarly, we are seeing this time also, but they have been caught. जैसे पहले नहीं हो पाया था during 2008. So 3 men, they've been held after reaching Mumbai. Again, they've reached Mumbai from Kuwait by the boat. So they're believed to be Kuwaiti nationals. And so after 2008, firstly, we saw what steps were taken in order to ensure again the coastal security. So we saw that a national investigation agency that was formed again to investigate and ensure that no terrorist attacks that are carried out. Then secondly, we talked about strengthening of the Indian Coast Guard, the capacity building, the increased role and synergy between different agencies, like when talk about Indian Navy also. So these steps were taken, and then usage of technology that was enhanced and that was implemented more effectively with the help of usage of drones and different radars in order to identify the unknown boats and the vessels in the waters. And we can also say how India's role has also increased as far as preventing the incidents of piracy is also concerned. So this is there when we talk about overall जो vision है या जो role है India का in the specifically Indian Ocean region or Indo-Pacific, that is the net security provider. And we also say कि we also want to be the blue navy. तो blue navy means अगर world में किसी भी part of ocean में area में attack होता है तो Indian vessels or the security forces, the navy, the naval forces should be available and they should reach there in the shortest possible time. So that is also being emphasized. जैसे So आज what अगर for? What for? Can you hear me? हाँ जी सर. So what four key phrases will you use for all what you have described just? 4 key phrases. First will be the net, Summarize. Net security provider and then vision of Sagar, security and growth for all in the region. Thirdly, I would say rising global regional power, and India is an important player in the Indo-Pacific region. fourth one is a very common one, but then first and second were fine. So you have to bring phrases, key big phrases, whenever you are summarizing any of the, any of the article or the issue that anyone is discussing, because that is what is going to remain actually. Because you cannot think about all these. These are all at the background. ये भेजा, वो किया, ऐसा हुआ, हाँ जी. ड्रोन हुआ, तो दे आर ऑल टेक्नोलॉजिकल. एक टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, एक उसका मैन मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, हाँ जी सर. स्ट्रेटेजिक कमांड का एस्पेक्ट है. सो यू हैव टू ब्रिंग बिग 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 फ्रेजेस अलोंग विद दैट ऑन योर ओन. हाँ स्टार्ट जी, डूइंग ठीक है. इट. Okay, so then next article, again from the perspective of internal security and the role of NGOs. So Foreign Contribution Regulation Act is there, and we've talked about key 16,000 NGOs are having licenses. So they are functioning legally, and we have seen diversion of funds is the main issue as far as NGOs and the funds is concerned. So 20,000 FCRA licenses have been cancelled. Most is from the state of Tamil Nadu. So of late, we have seen certain examples like Center of Policy Research. Their license has been cancelled. NewsClick, हमने बात करी पहले. And then Islamic Research Foundation, Zakir Naik's Foundation, जिसके हम बात करते हैं तो this is there. इसके अलावा हम इसको in detail में we've talked about this. Apart from this, अगर हम data देखते हैं so 2015 में we saw the maximum number of licenses being concerned. So we are seeing more. This also forms part of, we can say, good governance. And so Delhi receives the maximum amount of foreign contributions. So even when we talk about law and order situation or certain NGOs have been found as a part of the propagandas being run on the social media platforms. So that was found to be violation of
the FCRA Act. Then next, again, we're talking about the role of opposition in the democracy. So PM's address did not touch upon the key issues. So as I just mentioned, what were the key areas? So here we can take away the three important data which are mentioned. So unemployment rate, here we seeing that previous article में हमने बात करी unprecedented unemployment rate. So here since they are talking the context of UP years, so we can talk in terms of the timeline. So we say that during that time, unemployment rate, it was at 2.2%, but post 2014, it has been hit the 45-year high. So this is there. And then secondly, we're talking about GDP growth rate, how that has changed. So average GDP growth rate, it was 8%. We are talking about 2005 till 2014. So 8.13 percentage, and post 2014, it has declined to 5.6%. Thirdly, we are seeing the gap between exports and imports, it has also increased 3 times in last 10 years. So gap is increased, so it reflects exports has declined, but imports have increased. So this gap also reflects that even the current account deficit would have, the trend would have been on similar lines. So it's three major areas, okay? We're talking about comparison of the performance. Thirdly, next article is about how we are again ensuring more efficient or reducing the logistics cost. So PM Gati Shakti program की बात करते हैं about logistics, about infrastructure creation of defense corridors or freight corridors. So satellite based यहाँ हम toll collection की बात करें तो recently we saw कि RFID tags, fast tags जो हैं that has replaced. So entire system now we can say it has been digitized. We have moved to the next step. And now we are talking about कि जैसे advanced countries like USA में GPS based toll collection होता है जिसको again satellite based भी बोल सकते हैं तो उसको implement करने की बात की जा रही है on highways. So this will provide barrier-free movement for the vehicles, so will not have to stop. This would also help in terms of improving the fuel efficiency of the vehicles, and they will not be required to stop for the toll payments. Even And adding, cost of transportation can be brought down. And ultimately, जो final cost है, or जो price of the final goods being transported, that can also be reduced. Plus, it can also be helpful in promoting more tourism, specifically through the roadways. So these can be some of the benefits. so it's by adding to one benefit, we have seen the fake toll collection in Gujarat. इसमें toll booth ही पूरे fake थे, तो उनको डील करने के लिए this will be a suitable method, satellite based toll collection. Second, इसमें issue क्या होगा, data privacy. आप कहीं भी जा रहे हो, your satellite data from the car will be tracked. तो इसका एक concern है for implementing such measures before Data Protection Act must be implemented. And even RFID tags की बात करते तो we have seen कि 98% penetration has been achieved. So 8 crore fast tags ये भी reflect करते हैं number of vehicles which are there. और इंटीग्रेटेड करने के लिए ताकि एक ही गाड़ी के ऊपर 2 फास्टैग ना हो तो उसके लिए भी गाइडलाइन अलो की गई है कि मार्च तक सभी को जो भी रजिस्टर्ड आपकी गाड़ी है उसी के अंदर फास्टैग को इशू करवाना पड़ेगा ताकि जो टैक्स देके जाते हैं कि 2 फास्टैग उसकी वजह से वो स्कैन नहीं हो पाता तो वो वैसे ही गाड़ी को मूव करने दिया जाता है क्योंकि औरों को दिक्कत होती है तो उस चीज को भी सोल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड एक सबके इंफॉर्मेशन हो उसको करने के लिए भी अलाउ किया ओके तो डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा. डोंट यू थिंक सो कि हम हम टेक्नोलॉजी को तो इंटीग्रेट कर रहे हैं बट पब्लिक के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट हो रहा है जैसे जैसे हम बार बार चेंजेस लेके आ रहे हैं. I think these are structural changes which are important for even we can say जो हम potential GDP reach करने की बात करते हैं तो these are important. Short term
inconvenience we can say हो सकता है, but since again the system is digitized and इतना difficult नहीं है even to get fast tags, you can order it just through your mobile phone. So that is not, we can say, a major cause of concern or an issue. Yes. Okay, next article is about counter space capabilities. So we say कि जो space है, that is a part of global common, and of late we are seeing certain trends as far as militarization of space is concerned. So that is one of the major concerns. So here our Chief of Defense Staff Anil Chauhan sir, he urges the industry to work on counter space capabilities. So here we can say an important role and contribution of the public-private partnership can be important, and how even in terms of space exploration or the space missions we are seeing in space, or we are promoting more participation and contributions part of the private sector. So their expertise, and through this we can say we are promoting more indigenization and self-reliance here. So through that also we are seeing how competitive have been our space missions. And यहाँ पे we talk about different factual things. So we are seeing कि even startups can play an important role here. The innovative industry and ideas can contribute. So DevSat was the exhibition. DevSat 2024 was organized. Center for Joint Warfare Studies and Satcom Industry Association. Space economy keyword we can use as subheading. So Indian space economy currently estimated to be around $8.4 billion. So indigenous space economy, as we're just mentioning about this, and expectation is that it would be growing around $44 billion. So that is huge. Seed fund scheme. So here we are seeing tax incentives are being provided. Zero GST regime. No GST has to be paid. So seed fund scheme, initial funding को हम बोलते हैं seed fund, which is again helpful during the initial years of growth. Then sharing of testing facilities, technology transfer provided to the rightful support to the private industry. So alignment of demands and funding support. This is the important phrase. So space domain ko we are taking it towards strengthening the capabilities of the armed forces. So even in terms of जैसे हम satellite की बात करते तो even in communication, strengthening the capabilities of defense forces or the armed forces can be important. Internal security, maritime security, that is going to be important. And satellite की अभी जैसे हम बात कर रहे थे of the toll, satellite based toll. So it is connected to, we can say, each and every aspect in the current times. And Mission Defense 2022. So IDEX was the initiative under which this mission was initiated. So Apart from 75 that, related challenges were as a part of this mission, 75 challenges. apart from that, ASAT missile, which is being designed by the DRDO, is an anti-satellite missile. India has become fourth country in the world. 2019 में ऐसा हुआ था. Okay. Next Space से article. related एक और है Outer Space Treaty 1967 Act, which talks about free use of space and equitable use of space for all, and it should not be armed against any country. Okay. And Outer another space concern related to space is the space debris. debris. इवन हाँ इसमें भी हमने बात करी कि हाउ इंडिया इज बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्पेस पावर, वी आर आल्सो टेस्टिंग ऑन कि जो स्पेस डेब्रिस है, जो मिशंस भेजे गए, देयर टेन्योर हैज कंप्लीटेड, तो हाउ वी आर इंश्योरिंग कि दैट इज ब्रॉट बैक एंड डिस्ट्रॉयड, दैट टू रिस्पॉन्सिबली, नॉट इम्पैक्टिंग द सिक्योरिटी ऑफ इवन द इंडियन सिटीजन्स. Then next And article is about these satellite we are targeting are located in Leo, right? Yes. Lower. like anti-satellite, हाँ हमने ये ठीक है, ASAT counter space capabilities. So that is not placed in a particular orbit, I think, ASAT.
That is kind of a, No, I guess, the satellites that are placed in the LEO orbit I was talking about. can you Mostly repeat? the Earth observation satellite are placed in LEO. तो इसलिए ASAT एंटी सैटेलाइट मिसाइल टारगेट्स दैट सैटेलाइट विच आर प्लेस्ड इन द LEO. वो मिसाइल है, वो LEO में जो सैटेलाइट है उसी को टारगेट कर सकते हैं, GEO में नहीं कर सकते. यस. तो इन अ ब्रेक थ्रू यहाँ न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं. तो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट इट इज बिलीव्ड कि न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई है विच आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो रिलेटेड टू एंटीबायोटिक्स वी हैव टॉक्ड अबाउट द कंसर्न ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. So here, in terms of better drug delivery, certainly the names of chemicals have been mentioned, like initial discoveries जो हुई antibiotics में, streptomycin, which has been an important part of the drug as far as reducing or healing of tuberculosis is concerned. So Nature magazine है, this can be cited in the answers. Enhancing drug development. So the approaches that have been used is deep learning to discover new drugs. So deep learning is the key phrase. So इनको हम technically बोलते हैं substructures. ठीक है, और इसका इतना डिटेल में कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इससे बस ये जान सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क दैट इज मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क एक पार्ट है एंड इट कैन बी यूज टू डीप लर्न, प्रेडिक्ट द इम्पोर्टेंट ड्रग्स और जो चेन्स एंड मॉलिक्यूल्स है इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप से, इसलिए आसानी से डेवलप होते हाँ, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और मतलब एक्सप्लेनेटरी चीजें ड्रग्स. खुद ही हाँ. पता लग रही हैं जो पहले इतना क्लियरली जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन बात नहीं. करते हैं पीरियोडिक टेबल में आप दो एलिमेंट के बीच में आप एलिमेंट डिस्कवर कर सकते हैं, वो तो फिजिकली होता है, लेकिन यहाँ पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ड्रग्स, क्योंकि सबका प्रोटीन सिंथेसिस डिफरेंट है, प्रोटीन सबका मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है. तो जो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, इट इज परफॉर्म बाय द न्यूटन नेटवर्क. तो एफिशिएंसी बढ़ाने. Okay, coming to science quiz. So here we see the answers of previous quiz. So the third plate of the Murray's triple junction, African plate बोलते हैं. We can have a look at the map also for better understanding. The fault that runs from Murray's triple junction to Karliova triple junction, उसको East Anatolian fault बोलते हैं. टर्की के आसपास प्लेट है, इसी ठीक है. में इशू होने से अर्क गया था. ठीक है. Common name for transcurrent fault, strike slip fault. Then scale which is used to measure the magnitude of the aftershocks. Aftershocks के लिए body wave magnitude use करते हैं. And जब हम बात करते हैं scale on which the Turkey Syria quakes had the highest magnitude, तो modified Mercalli intensity scale. तो दो scales होते हैं, एक तो earthquake का magnitude measure करते हैं तो वो सिस्मोग्राफ के थ्रू होता है, एंड सेकंड होता है इंटेंसिटी. तो इंटेंसिटी मेजर करने के लिए मर्कैली स्केल यूज करते हैं. एंड मैग्नीट्यूड के लिए हम बोल सकते हैं रिचर स्केल यूज करते हैं. हाँ, रिक्टर स्केल. ठीक है, रिक्टर स्केल एंड सिस्मोग्राफ. ग्राफ में तो वी गेट टू नो कितना सिवियर था. ओके, ठीक है.